Yo, what's up guys? Check out the fucking new jacket. शेर है आज हम. Welcome to the new video. जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं यार. You guys check out the new t-shirt as well. वैसे ही मैंने पहले भी पहनी हुई है. I think H&M यार. H&M के कपड़े ना बहन जो एक तो होते हैं धो ना इतने बहन जो खिंच जाते हैं. पर Zara में इतने कलर्स नहीं होते. So what I do is I go to H&M, I go to Zara. जितनी भी slim fit t-shirt होती है ना मैं सारी उठा लेता हूँ. ज़्यादा बकचोदी नहीं करते. Let's start with the video. Let's go. Let's cue the B-roll intro. Addy का गाना बजाते हैं. Let's go. Welcome back guys, welcome back to another video. My name is Kshitij. If you don't know who I am, I hope you guys know who I am because you subscribed. You subscribed, right? No? नहीं? अभी तक नहीं subscribed. अभी तक, come on, what are you doing? Just there's a subscribe button. Just go hit it, spank it, smash it, demolish it, and then hit the bell icon also. उसके साइड में जो घंटा है वो बजाओ, मंदिर का घंटा, hit it. So you guys know who I am. My name is Kshitij. I teach you guys about dating advice, personal development, and how to build that Iron Man lifestyle, your dream lifestyle. And in today's video, we're gonna talk about treating everything like it's part of the plan. Because क्या होता है ना लाइफ में, most of the time लाइफ में और गेम में और dating advice में ऐसा होता है you have a certain plan that this is how things are going to be. Because life में क्या होता है ना, not everything goes according to plan. Similarly in game, not everything goes according to plan. You might be talking to a girl and everything will be going amazing and suddenly she gets a call. Now her mom's going back to her place और वो घर पे नहीं है and she has to fucking run away. वो भाग जाती है. Set वैसे चला जाता है. You don't even have the time to exchange numbers. And if you try to exchange numbers, she's like no बहुत problem हो गया. Another thing could be you're talking to a girl, everything is going amazing, the sexual tension is building and that part is coming where you can go for the kiss. अब suddenly क्या होता है? She meets some fucking family members right in the club right then and there और वो घर से झूठ बोल के आई हुई है कि वो अपने पीजी में है या वो अपने दोस्त के पास गई हुई है. But now here she is there in the club, she's partying. Guess what's gonna happen? She's gonna freak the fuck out and clearly she does not want to be seen with the guy at that time. तो वो सेट भी तुम्हारा डेड हो गया. कई बार क्या होता है, तुम सेट में हो, तुम बातें कर रहे हो, काफी सही जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट राइट. इन सिनेरियोज में ना हमेशा सारी चीजें बहुत अमेजिंग जा रही होती हैं एंड ऐसे ये सर्टेन एक्सटर्नल इंटरप्ट्स या सर्टेन फकिंग अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस बस तभी होते हैं व्हेन थिंग्स आर गोइंग ग्रेट. मर्फीज लॉ. यू माइट बी टॉकिंग टू अ गर्ल, सब कुछ सही जा रहा है एंड देन सडनली शी इज सो फकिंग ड्रंक शी कैन नॉट स्टैंड. और अब पुल तो तुम कर नहीं सकते बेटा, अब क्या करें? या फिर ऐसा होगा यू टॉकिंग टू अ गर्ल बहुत सही एंड सडनली सम गाय कम्स इन जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है एंड शी डज नॉट वांट टू फील लाइक अ स्लट. या फिर यू टॉकिंग टू अ गर्ल एंड सडनली लॉट ऑफ फ्रेंड्स कम इन, दे लाइक शॉट करके उसको ले गए या फिर शॉट हो रहा है एंड देन यू आर फकिंग ओवरवेल्म्ड by the energy and you're like oh fuck यार अब मैं क्या करूं कैसे करूं because अभी तो इतना सही जा रहा था और अब ये क्या हो गया है. या फिर another thing could be happening, you're talking to a girl, ना उसके दोस्त आते हैं, ना बॉयफ्रेंड आते हैं, ना फैमिली मेंबर्स दिखते हैं, ना वो ड्रंक है, कुछ नहीं, तुम नॉर्मली बात कर रहे हो. साइड में दो चार लड़ने लग गए बिकॉज यू नो दिस इज इंडिया या दिस इज दिल्ली. वो बंदे लड़ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं तो यहाँ पे लड़ाई हो गई है, उसको धक्का दे दिया है, उसकी ड्रिंक गिर गई है, नाउ शी सडनली इन अ बैड मूड. तो वो जो इतनी देर तक तुमने गेम करके उसका बाइंग टेंपरेचर बढ़ाया था एंड यू पुट इट इन अ गुड इमोशनल स्टेट, वो सारा पानी में मिल गया और ऊपर से पानी में भी क्या मिला, वो और भी नेगेटिव चला गया है. अनदर थिंग दैट हैपेंस यार बहुत काफी होता है दैट यू टॉकिंग टू अ गर्ल एंड सडनली व्हाट हैपेंस इज योर विंग और यू ओनली, तुम खुद ही बिकॉज तुम पिकअप में स्टार्ट हो रहे हो तो तुम्हें ज्यादा पता नहीं, यू गेट इनटू अ लॉजिकल आर्गुमेंट विद द गर्ल एंड दैट्स फकिंग क्रेजी डूड. इफ यू गेट इनटू अ लॉजिकल आर्गुमेंट विद द गर्ल यू आर फक्ड. डू नॉट गेट इनटू अ लॉजिकल आर्गुमेंट, जस्ट फॉरगेट इट. Let her win that point. It's not important to win a logical argument over getting the set. छोड़ दो. अगर तुम्हारा वो विंग भी कर रहा है ऐसा तो उसको बोल दे भाई छोड़ दे, रुक जा, just salvage the situation. अपने विंग को अलग कर दे and just talk to the girl and then just get some fucking jokes and banter and बकचोदी डाल दो उसमें, वो solve हो जाएगा. A quick side note here, all these were examples of when you think things are going a certain way but suddenly वो ना change हो जाती हैं. इस मोमेंट में तुम्हें क्या करना है ना, you gotta be very very fucking fluid with pickup. You gotta be very fluid and that's one of the superpowers in pickup that you need to learn and even for life. एक तो यार if you guys are following my vlogs, I've spoken a lot about the concept of impermanence, that things are never permanent. They will always be changing. Things are always transient. कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, कभी अच्छा चल रहा है. Everything will pass. So there's no point getting attached to a good thing or a bad thing. अब इसमें when you're talking to a girl, suddenly some shit has fucking happened. Things have gone crazy. पहले तुम्हारा सेट अच्छा चल रहा था, अब fuck up हो गया. Now don't be like यार मेरा सेट तो पहले इतना सही चल रहा था, अब मैं क्या ही करूं यार, बहुत सही सेट चल रहा था, वो fuck यार what do I do, इतना सही चल रहा था और फिर वो सेट डेड हो गया. तुम अगले सेट में भी जाके उसी नेगेटिव लिटिल मूड में जा रहे हो and you're telling your wings यार मेरा सेट पता है इतना सही चल रहा था, we hit it off completely, but लेकिन वो भैंसो तुम्हारी लड़ाई हो गई, but लेकिन भैंसो उसके घर वाले दिख गए, मुझे ये हो गया वो हो गया. अरे ये करने का कोई पॉइंट नहीं है. Either you can obsess over the fucking problem or you can look for the motherfucking solution. And the solution here is to treat everything like it's always part of the plan and having no fucking agenda. So if anything wrong happens in game while I'm talking to a girl, I treat it like it was always part of the plan. And I don't go into my head of visualizing कि यार मैंने तो सोचा था ये होता, मैंने तो सोचा था ये होता और इतना सही होता, ये होता वो होता और फिर अभी वो मेरे दो बच्चों की माँ हो जाती. अरे
नहीं हुआ ना, वो हो गया ना खत्म। अब रियलिटी में जो व्हाट इज द रियलिटी राइट नाउ, द रियलिटी राइट नाउ इज दैट शिट इज फक्ड अप एंड दिस इज द रियल थिंग हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गीता में बकवास नहीं लिखा है, द पास्ट इज अ फकिंग इल्यूजन, लेट इट गो। पास्ट में वो चीजें सही हो रही थी बट दैट्स अ इल्यूजन, अब नहीं हो रही है वो चीजें, इसलिए उसको जाने दो। रियलिटी में देखो ओके अब हम क्या कर सकते हैं, अब विल ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन एंड अपना इमोशनल स्टेट भी डाउन मत होने दो, बिकॉज़ इफ यू स्टक इन द पास्ट इन दैट फॉल्स लाई व्हिच डज नॉट फकिंग एग्जिस्ट, योर स्टेट विल गो डाउन बिकॉज़ यू वुड हैव ऑलरेडी इमेजिन्ड अ फ्यूचर जहां पे वो लड़की तुम्हारे 2 बच्चों की मां है। Meditation really helps with this, where you focus in the present moment, no matter what fucking happens, you're not thrown off your center and you're treating everything like it's part of the plan. और ये तो होना ही था, and being centered and emotionally chill at that time, और फिर वो set को वैसे run करना like you have newly opened that set. I have a story for this as well यार, काफी बारी पहले हुआ है मेरे साथ ये। I meet a girl, we're hitting it off completely well, completely amazing, सब कुछ सही जा रहा है, but just somehow I cannot close that day, I cannot get a number, I cannot pull her, something has happened, कुछ चुतियाब हो गया है, बस वो नहीं हो रहा है उस टाइम पे। So अब अगले हफ्ते when I go out, I might run into the girl again, अगले हफ्ते या next month या sometime आगे जाके I run into the girl again and try to pick things up from where I left off, but I forget one very important thing जो मेरे को बाद में जाके realize हुई जब भी मैंने ये चीजें fuck up करी थी, because anytime I would pick things up from where I left them off या फिर thinking कि पिछली बार ऐसा हुआ था और अब मैं instantly जाके कि मैं सीधा close और pull कर सकता हूँ, मैं make out कर सकता हूँ, but the girl would go cold, she'd start ignoring me and she'd start behaving जैसे यार मैं कोई बहुत बड़ा सा creep, और मेरे को बहन कभी समझ ही नहीं आता कि यार पहले तो इतनी on थी और अब off हो गई, क्या सीन हो गया। And then I realized later on that women are emotional beings again. उस टाइम पे जब मैं पहले मिला था उससे, that time her emotions were high, and now next time when I'm meeting her, although we've established some form of sexual tension and some form of interest is there, but now that I met her after so much time, she's not in that same emotional state, her emotions have changed, काफी टाइम चला गया उस चीज में, और मैं यहाँ पे लॉजिकली सोच रहा हूँ यार पहले तो सीन होने ही वाला था या पहले तो सीन हो ही जाता, मैं अभी सीधा कर लेता हूँ, और वो कभी होता नहीं है। Why? Because I'm still stuck in that past which is not fucking real. What you have to do in this situation is meet the girl, see where she's at, see उसके emotions कहाँ हैं, compliance test her, Kino test वगैरह करो, Kino compliance testing करो। So if you see that girl again, तो वहां पे देखो कि चल क्या रहा है सही में, ये नहीं कि पहले सोच के बैठे कि मेरे को मिलेगी जैसे मैं एकदम से क्लोज कर दूंगा। रियलाइज दैट women are emotional beings, उनके इमोशंस चेंज होते हैं, काफी टाइम चला गया है उस मीटिंग में और इस मीटिंग में, and now she might be feeling something completely different. And remember what I told you पहले, women are like a volume knob, धीरे 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 her emotions get turned on, धीरे 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 चीजें होती हैं। तो अब वो स्पीकर्स अगर तुम ऑन करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है वो वॉल्यूम बढ़ाने में, वर्सेस अ लाइट स्विच लाइक अस कि यार भाई ऑन है तो ऑन ही है, ऑफ तो हो ही नहीं रहे हैं। तो women के इमोशंस चेंज होते हैं। So now talk to her normally, figure out what is happening, persist, persevere, धीरे धीरे करते करते get her turned on, raise her emotions, बातें करते करते slowly build the vibe, take her on that journey with you, and then धीरे धीरे जाके you can get to the close and end up getting that girl. With that being said, that's going to be the video guys. I'm going to see you guys next time. If you're not subscribed yet, hit the subscribe button because I know you're enjoying the fucking videos guys. Come on, hit it, spank it, smash it, demolish it. I'll see you guys tomorrow. Peace. Drop it. ये फोन बजेगा यहाँ पे, खाना आ गया आई थिंक हमारा। हेलो, हाँ जी भैया।